Hello student, how are you all? Okay, I hope you and your families are well and good at your home. Okay, stay safe. Okay, so last we are done with the exercise 10.3 done, on which we have seen the other types of unit, right? Okay, so today we are going to take new topic after the other units done. Okay, so now there are two new topics, which is addition and subtraction of the measurements done. So okay, so we have seen the three types of measurement. It is for the length, weight and capacity, right? So अभी इन measurements के बीच में additions और subtractions के questions भी आते हैं, right? So that we will see then. Okay, which is about the in the next exercise, which is exercise 10.4. okay. Okay, now let's see the exercise 10.4 on which we have given the question of addition and subtraction both. Then उसमें हमें दोनों टाइप के एग्जांपल्स दिए हैं for it is for the addition and for the subtraction. Okay, just wait a minute. Okay, okay, so exercise 10.4 is in page number 157. Okay, now as we have seen then that कि अभी हमने पहले देखा कि तीन टाइप के मेजरमेंट होते हैं, उसके हमने यूज भी देखे अलग अलग, right? Okay, so now what is the need for that addition and subtraction in this one also? Then अभी इसकी क्या ज़रूरत है, right? I guess you have a kind of question. Then so this is needed because when we need to buy some food or anything from the market, so we generally do like that only. Done कि अगर तो हम क्या करते हैं, हम इसी तरह से करते हैं. So at that time we need to add or we need to subtract the weight or amount from that. Done. So इसलिए हमें addition की इसमें ज़रूरत पड़ती है. और either if we go to buy let's say kind of fabric, then हम fabric खरीदने गए, then and the shopkeepers take our measurement that this much measurement of fabric means कापड़ आपको ये चाहिए रहेगा. Then so for the shirt you purchase let's say 3 meter or 2 meter, then and for the pant you need 5 meter. Then now so as per that, if the shopkeeper give you total 10 meters or 10 meter if he give you total 5 meters of copper, then you will get the idea that कि 5 meters तो सिर्फ मुझे पैंट के लिए चाहिए, तो आपको वो उस जगह पर ये ज़रूरत हो सकती है, right? So in this kind of things for the buying just like this fabric, or if you go for buy for kind of vegetables or any kind of things, then so उसमें ये सब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मेजरमेंट होता है, right? Okay, so there उस सारी चीज़ों में और बहुत सारी चीज़ों में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज होता है. So we have, so this topic is given. Okay. Okay, so question number 1, write in column and add. Then so हमें जो भी numbers means जो भी measurements दिए, first thing we have to do that we have to write that in the column, and then after we have to add them. Then so question 1 is given for the addition only. Okay, so first question number A, 1A, 20 meter, 50 centimeter. So this is the first measurement. 12 meter, 28 centimeter.
this is the second measurement, and 60 meter 24 centimeter. This is the third measurement. Okay, now we need to add them. So first of all we will put into a column. तो पहले हम उसको क्या करेंगे, कॉलम में पुट करेंगे. देन फर्स्ट विल ओवर हियर आपको किस तरह से बनानी है, मीटर और सेंटीमीटर में सारे मेजरमेंट दिए. सो फर्स्ट ओवर हियर यू विल राइट द मीटर एंड ओवर हियर यू विल राइट द सेंटीमीटर. राइट, अब मीटर वाले लिखते हैं पहले. फर्स्ट वन इज द 20 एंड 50 centimeter, right? Second one is the 12 meter and 28 centimeter, and third one is the 16 meter and 24 centimeter. Okay, so that's how you need to add them. Done? So इस तरह से आपको एडिशन करना है. पहले आपको उसको कॉलम वाइज लिख लेना है. Then after you have to add it. Okay. Okay, now we are going to add it. Okay, 0 plus 8, 8 plus 4, 12. Okay, 2 here, 1 carry over. Done. 5 plus 1, 6 plus 2, 8 plus 2, 10. 0 here. Now this one will carry over to in this meter section. Done. अभी ये जो carry over होगा वो यहाँ पर मीटर में होगा, right? Now 1 plus 0, 1 plus 2, 3 plus 6, 9. 2 plus 1, 3 plus 1, 4. Okay, so the answer is 49 meter and 2. It means 2 centimeter only. Then 0 2 it means 2 centimeter. Understood? Okay. This is the first question. Second question. Okay, I am not doing the B1. I am directly doing the C1. Okay, now I am directly representing it into the column. Okay, column wise ही directly मैं लिख रहा हूँ. Okay. Question number C. Okay, so all the measurements are given in the kilometer and meter. So I am writing in the kilometer over here and meter over here. Okay. Now write down the measurement. First one is given as 100 kilometer and 750 meter. Second one is given as 95 kilometer and 601 meter. Okay, these two measurements are given and we need to add them. Then see आपको put appropriate ही करना है. 100 वैसे 1 digit के नीचे 1 digit ही होना चाहिए. उसके बाद ये 95 ये 9 1 के नीचे नहीं होना चाहिए, because this is the 100 and this is 95. Understood? Okay. Now let's add them. 0 plus 1, 1, 5 plus 0, 5, 7 plus 6, 7 plus 6 is 13, 3 here, 1, carry over, 1 plus 0, 1 plus 5, 6, 0 plus 9, 9 and 1 as it is. So यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, है? So ये आपको पहले याद रखना है ताकि ये इसमें मिसकैलकुलेशन ना हो जाए, right? Okay. Now the answer is 196 kilometer and 351 meter. Okay. Okay. Now let's do the next question. Question number D. So in that one, all the measurements are given in kg and gram. So we'll write only in kg and gram. Okay. And the measurements are like 5 kg, 200 gram, 7 kg,
11 ग्राम। सो 11 आपको इस तरह से यहाँ पे रखना है, देन आगे नहीं रखना है, उसके आगे हम एक 0 पुट कर देते हैं ताकि वो कंफ्यूजन ना हो एडिशन के लिए। एंड आफ्टर 12 kg, सो 12 आपको इस तरह से पुट करना रहेगा, एंड 103 ग्राम, एंड ऑल ऑफ देम यू नीड टू ऐड। यहाँ पे कुछ डिजिट नहीं है, वहां पे हम 0 पुट कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन में आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, now let's add them. 0 plus 1 plus 3 4 1 3 7 5 plus 7 12 plus 2 14 1 carry over 1 plus 1 2. Okay, so the answer of this one is 24 kg and 314 grams. Let's do the one more question for this one. Okay, so now we are doing the question number G. So the question number G is or in this one, or the measurement is given in the liter and milliliter, and so we'll write like that only, liter over here and milliliter over here. Okay, so first one is 7 liter and 420 milliliter. Next one is 4 liter and 690 milliliter, and the last one is 3 liter and 120 milliliter, and we need to add them all up. Okay, let's start adding. 0 plus 0 plus 0 0, 9 plus 2 11 plus 2 13, 3 here, 1 carry over, then 4 plus 6 10 plus 1 11 plus 1 12, 2 here, 1 carry over, right? Next 7 plus 1 8 plus 4 12 plus 3 15. So the answer is 15 liter and 230 ml. Done? Okay, so that's it for the addition. Then I have done the A, C, D and G. Then out of 8 I have done the 4, remaining 4 you have to do in your homework. Okay, now let's see the question number 2. This question is about a subtraction question. Okay, so I am directly doing the second one, and that one you have to do the subtraction. In the second one the question is like 11 kilometer 900 meter from 15 kilometer. So that means आपको 15 किलोमीटर में से 11 किलोमीटर और 900 मीटर सब्ट्रैक्ट करना है. फ्रॉम मीन्स उसमें से करना है. देन सो वो एक याद रखना. एंड डायरेक्टली सो आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा कि 11 किलोमीटर में से हम 15 किलोमीटर माइनस वैसे भी नहीं कर सकते, राइट. सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द 15 किलोमीटर ओनली. देन सो फर्स्ट ओवर हियर विल राइट द किलोमीटर, हियर विल राइट द मीटर. क्वेश्चन नंबर बी. ओके, सो 15 किलोमीटर, यहाँ पे कुछ मीटर दिया नहीं है, सो विल पुट द 30 and 2 and 3. Okay, and after 11 and 900, 11 kilometer and 900 meter, we have to subtract it. Okay, now let's do it. 0 minus 0 0, 0 minus 0 0. Okay, let me do with the other pen. Now 0 minus 9, that cannot be, so we have to borrow it from here, kilometer. So this would be cutted and we'll make it 4. 5 में से 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोरो लेके 10 आ जाएगा, right? Because now 10 minus 9 will remit 1, 4 minus 1 3,
and 1 minus 1, 0. So the answer is 3 kilometer and 100 meter. Done? Okay, so that's how the subtraction is going on. Okay, next let's see the dialect question number D. So the question is like 1 kg 88 gram from 5 kg and 700 gram. Then 1 kg means 507 5 kg and 700 gram में से हमें 1 kg and 88 gram subtract करना है. Okay, so the measurement is given in the kg and gram only. किस में से करना है? सो वो हमें पहले लिखना रहेगा 5 kg 5 kg and 700 ग्राम, उसमें से माइनस करना है 1 kg and 88 gram. Okay, over here I'll put the 0 and ताकि confusion ना हो. Okay, now 0 minus 8 cannot be done. So यहाँ से भी कट नहीं हो सकता because यहाँ पे तो 0 है already. Okay, so हमें कट कहाँ से करना पड़ेगा? यहाँ से कट करना पड़ेगा. So that 7 would be cutted and we'll make it 6. तो वो 7 कट हुआ तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, राइट? अभी वो 10 हमें कट करना है बिकॉज यहाँ पे हमें लेना है 10. सो ये 10 कट होके क्या हो जाएगा 9 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 10. देन सो इस तरह से प्रोसेस होती है. देन डायरेक्टली सम ऑफ यू आर डायरेक्टली डूइंग इट लाइक 10, उसके बाद डायरेक्ट जितने भी जीरो आते हैं वहां पे 9 कर देते हैं, राइट? बट वो 9 कैसे होता है? वो इस तरह से होता है, राइट? फर्स्ट विल टेक 6 ओवर हियर, मींस कट करके 6 हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पर वो 6 हुआ, उसका 10 यहाँ पे आएगा. देन अभी हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है तो ये 10 को हमें कट करना पड़ेगा तो वो 9 हो जाएगा. तो वो 9 हो जाएगा तो वो यहाँ पर उसका वो 9 हुआ, उसका 10 यहाँ पर आएगा. Understood? So that's how the second zero will convert it into 9. Understood? Okay, now 10 minus 8 2, 9 minus 8 1, 7 minus 0 6 minus 0 6 as it is, and 5 minus 1 4. So the answer is 4 kg and 612 gram. Done? Okay. Now let's do the other question as a now let's do directly the question number F. Let me erase this one also. So we'll next the question number F. The question number F is given like a 9 kg and 700 gram, 9 kg and 720 gram from 15 kg and 10 gram. Okay, so we'll have the measurement in kg and gram. Again we have to subtract it 15 kg and 10 gram to means उसमें से subtract किसको करना है 9 kg and 720 gram, right? So that's all the measurement. यहाँ पे एक जीरो पुट कर देता हूँ so then मैं confusion ना हो calculation में. And we have to subtract it. Okay, now let's do the subtraction. 0 minus 0, 0 as it is. 1 minus 2 cannot be possible. So यहाँ पे हमें यहाँ पे 0 है, वो लेना पड़ेगा. वो ये 0 में से तो ले नहीं सकते. So यहाँ पे kg में से लेना पड़ेगा. So with that 15 would be 5 would be cutted, become 4. यहाँ पे आएगा 10, राइट? अब ये 10 कट हो गया, बन जाएगा 9. यहाँ पे 1 पे आएगा 10. तो ये 10 डायरेक्टली हो जाएगा 10 plus 1 11, राइट? ओरिजिनल 10 ही आता है बट यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, सो इट कुड बी
it will be added, so it would be make 11. Now 11 plus 2, sorry, 11 minus 2 will be 9. Now 9 minus 7, then it will remain as a 2. Now अभी यहाँ पे 4 minus 9 नहीं हो सकता, so वापस हमें बोरो लेना पड़ेगा, so that 1 would be cutted, make it 0, और यहाँ पर 10 ऐड होगा तो हो जाएगा 14, right? Now 14 minus 9, the answer is 5. So the answer is, as per that, 5 kg and 290 gram. Okay. Okay. Now let's see the last one. H. On that one, the measurements are given in the liter and milliliter. Liter and milliliter. 7 liter 840 milliliter from 12 liter 920 milliliter. So first we will have to write the 12 liter and 920 milliliter. उसमें से किसको माइनस करना है? 7 liter and 840 milliliter. We'll put 0 over here. Okay, now let's do the subtraction. 0 minus 0 0, 2 में से हो नहीं सकता, सो डायरेक्टली 9 को कट करते 8 कर देंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा 12 एंड 10 plus 2 12. नाउ 12 minus 4 will be 8, 8 minus 8 0, 12 में से 7 सॉरी 2 में से 7 कट नहीं हो पाएगा, तो ये कट होकर आ जाएगा 0, ये कट हो जाएगा 12, so 12 minus 7, answer is 5. So answer is 5 liter and 80 ml. Done. So that's how the subtraction is done. Okay, so this is it for today. Okay, so in this second question also 4 questions I have done. Remaining 4 you have to do in your homework. Okay. Okay, so that's it for today. In the homework you have to complete the exercise 10.4 question number 1 and 2 both. Okay, bye.